Hello students, I am Sachin and welcome to my YouTube channel MacTech. Hello students, today we are going to discuss an important topic for your university examination, that is Lami's theorem. In this video we are going to discuss Lami's theorem and the proof of Lami's theorem. So let's start first statement from this Lami's theorem. What is the statement here? It states that if three forces, the important word is three forces acting at a point, it is another important word, acting at a point are in equilibrium, then this is another important term, equilibrium, are at equilibrium, then each force will be proportional to the sine angle between other two forces. राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल लैमिस थ्योरम अप्लाई कब होती है? जब थ्री फोर्सेस एक्ट करते हैं सेम पॉइंट पर, एक किसी पॉइंट पर थ्री फोर्सेस एक्ट करते हैं और इक्विलिब्रियम में होते हैं, तब लैमिस थ्योरम अप्लाई की जाती है. राइट, देन ईच फोर्स विल बी प्रोपोर्शनल टू द साइन एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस. सो अकॉर्डिंग टू द लैमिस थ्योरम, F1 is directly proportional to the sine angle between F2 and F3. Similarly, F2 is directly proportional to the sine angle between F1 and F3. Similarly, F3 is directly proportional to the sine angle between F1 and F2. जब हम इनको कंबाइन करते हैं तो ये हमको इक्वेशन मिलती है, that is F1 by sin alpha equal F2 by sin beta equal to F3 by sin gamma equal to constant. This is the Lami's theorem. Now we are going to prove this Lami's theorem. So now let's discuss the proof of Lami's theorem. किसी पॉइंट पर जब तीन फोर्स एक्ट करते हैं तो इनको हम विद द हेल्प ऑफ वेक्टर एनालिसिस ट्राइंगल की फॉर्म में बना सकते हैं. चलिए देखिए कैसे बनाएंगे. फर्स्ट हम हॉरिजॉन्टल लिख देते हैं F2. हॉरिजॉन्टल को यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है मैंने F2. फिर इसके एंड से मैंने स्टार्ट किया है ये F1, यहाँ इस पॉइंट से F1 स्टार्ट करते हैं. सिमिलरली फिर F3 बनाते हैं यहाँ से, दिस इज द F3. नाउ अब हम एंगल लिखते हैं F2 एंड F1. द एंगल बिटवीन F1 एंड F2 इज गामा. Angle between F1 and this F2 is gamma. We have written this. Now angle between F1 and F3, angle between F1 and F3, this angle, yes, this F1 and F3, F1 and F3 is beta. Similarly, angle between F2 and F3, F2 and F3, F2 and F3 is alpha. F2 and F3 is alpha. Right. Now, if this is gamma, this complete angle is 180, then this angle will automatically convert into 180 minus gamma. Similarly, beta 180 minus beta. Similarly, alpha 180 minus alpha. So according to the sine rule, what does sine rule say? Sine rule says that side divided by the sine angle of opposite, similarly equal to the side divided by the sine angle opposite sine angle. Similarly, side divided by the opposite sine angle are equal. Right. Similarly, for this F1 divided by the opposite sine angle, sine of the opposite angle, F1 divided by sine 180 minus alpha. Similarly, for F2 divided by sine of 180 minus beta. Similarly, F3 divided by the sine of opposite angle, that is 180 minus gamma. Sine 180 minus alpha is what? Sine alpha. Similarly, sine 180 minus beta is what? Sine beta. Similarly, for the sine gamma. बिकॉज वो फिगर छोटा है तो एंगल यहाँ से आप देख सकते हैं. देखिए ये बड़ा हुआ फिगर मैंने बना दिया है. So this is the proof of Lami's theorem. Right? Thank you.